The journey of we have already taken up the concept of ADCs. What are different types of the ADCs? This lecture is also available on YouTube. Like this time, if you face any issues with the quality, you immediately switch to that, and there you will comment your roll number so that I come to know how many roll numbers are actually online through YouTube, and उनकी attendance फिर वहीं से mark करेंगे. But they should be consistently there. Anyways, as I told you that we have gone through the basics of ADCs, analog to digital converters. इसमें हमने अब तक बस इतना ही देखा कि what are the different types of ADCs. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना ही देखा because I think we could have covered more, but just because online में coverage थोड़ी कम रहती है. I faced the similar issue in other class also, but that is not important. What the coverage is, जितनी भी coverage हो वो consistently हो, that is important. And ये topics हमें समझ आए, that is what matters. So let's go to one more important topic. As I told you कि exam point of view ये आज का topic बहुत important है, और इस पे गेट में न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं इस साइड से, क्योंकि जो बेसिक टर्म्स हम सीखेंगे और उन टर्म्स से ही न्यूमेरिकल्स आते हैं अक्सर. व्हाट्स योर रोल नंबर हु इज ऑन यूट्यूब स्ट्रीम? लाइव स्ट्रीम पे कोई रोल नंबर है इस टाइम? I think one person is there. You can comment your roll number and I can keep a track of that. That are you there itself or not? Okay. Anyways, the first term that we're going to go through is it is पहले जो टॉपिक है इट इज अबाउट आप DACs ले लीजिए, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स. डिजिटल टू एनालॉग पहले हम DAC की कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे. सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स है हमारे पास कुछ, इसका कुछ बेसिक है. So, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता क्या है? वी हैव ऑलरेडी सीन एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कुछ इस तरह से that this will be your input bits, this is your DAC and it will generate an analog value or analog voltage value. यही है ना डिजिटल टू एनालॉग. मैंने DAC की बात की, ठीक है ना. एक्चुअली जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स ही, लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स सीखेंगे अबाउट DAC एंड अबाउट ADC ऑल्सो, जो हमने ADC के टाइम स्टार्टिंग में नहीं की बिकॉज इट वाज a kind of new topic. So I thought let's at least see what ADCs are and then you will get to know about it. Are you noting it down beta? आप सब लोग लिख रहे हैं ना साथ साथ? हसीब आप लिख रहे हो? हसीब आप लिख रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लेक्चर. आज के नोट्स आप मुझे भेजोगे एट द एंड ऑफ द क्लास, ग्रुप में ही इनफैक्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स. बेसिक जो इसका है वो है, द फर्स्ट टर्म इज resolution. You can keep the heading as terms related to digital to analog converter. So the first term is resolution. क्या होता है एक ADC का resolution? आपको वाइवा में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछ सकते हैं, बेटा जरा resolution को डिफाइन करो. तो जरा डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लीजिए. Resolution of a digital to analog converter. Resolution of a digital to analog converter is the change in analog voltage output, is the change in analog voltage output corresponding to 1 bit increment. Okay, the resolution of a digital to analog converter is, हाँ जी, हाँ क्यों नहीं बेटा, क्या स्क्रीन रिकॉर्डर? अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डर क्यों ऑन करोगे फिर? जरूरत नहीं है स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करने की, आपके पास तो है ऑलरेडी यूट्यूब का ये. इट्स ओके, इट्स नॉट फॉर दिस कि आपने क्लास दी कि नहीं, बट इट इज फॉर दिस कि आप नोट डाउन कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं. एनीवेज, फिर आपका वाइवा होगा आज की क्लास के एंड पे, ठीक है ना, इंशाल्लाह. एंड सम मोर स्टूडेंट्स एज वेल दैट आई विल टेल एट द एंड ऑफ द अटेंडेंस. अटेंडेंस उसी बेस पे होगी. चलिए जी, बी अटेंटिव प्लीज.
So I told you that the first term in the digital to analog converter is the resolution. क्या होता है resolution? Resolution is the change in the analog voltage. Resolution is the change in the analog voltage output. Obviously क्योंकि output पे है ना, analog voltage output corresponding to 1 bit LSB increment of the input, corresponding to 1 LSB bit increment, corresponding to 1. ये सपोज ये आपका MSB है ऊपर वाला साइड एंड ये आपका LSB है, या इस तरह से अगर हम नंबर देखेंगे 1011 से, सो ये आपका LSB साइड आ गया. इसमें जब एक बिट का इंक्रीमेंट हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टेज कितना बढ़ेगा, राइट? क्योंकि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट मींस सबसे कम सिग्निफिकेंट बिट जो है, अगर वो इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1, उससे कितना वैल्यू जो वोल्टेज का वो बढ़ेगा. दैट इज व्हाट रेजोल्यूशन ऑफ अ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर इज. ठीक है. अच्छा, इसके रिलेटेड फॉर्मूला जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. रेजोल्यूशन जो है इट इज डिनोटेड बाय लेटर आर, कैपिटल आर. ठीक है. एंड दिस रेजोल्यूशन आर इज इक्वल टू Vref by 2 raised power n minus 1. इसको याद रखें प्लीज. It is equal to Vref divided by 2 raised power n minus 1, where your Vref is reference voltage. Reference voltage corresponding to लॉजिक 1. ठीक है. आपके डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में ये दिया हुआ होगा कि आपका जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है वो इस तरह से है वगैरह वगैरह. उसका जो लॉजिक 1 का रेफरेंस वोल्टेज है वो है 2 वोल्ट्स, वो है 3 वोल्ट्स, लाइक दैट. सो योर रेजोल्यूशन विल बी V reference divided by 2 raised power n minus 1. Obviously n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द इनपुट वर्ड. जो भी इनपुट वर्ड होगा, इनपुट डिजिट होगा, उसको कितने बिट्स से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट विल बी n. तो इसका मतलब एक पॉइंट तो निकल गया रेजोल्यूशन. अब पॉइंट नंबर 2, जो ये आपका एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, ये एक डिजिटल वैल्यू को किसमें कन्वर्ट कर रहा है? हाँ जी, एनीवन प्लीज स्पीक बैक. ये एक डिजिटल वैल्यू को किसमें किसमें कन्वर्ट कर रहा है? एनालॉग वोल्टेज वैल्यू में हम कह सकते हैं ना. सही है. सो इसका मतलब हर कोई डिजिटल नंबर जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एनालॉग वोल्टेज वैल्यू होगा. से फॉर एग्जांपल अगर मेरी लीनियर मैपिंग है, सपोज मेरा इनपुट में है 10 या 0010. यावर आप लाइन पे हैं? हाँ जी बेटा. ये कितना हो गया 0010? 2. अगर मेरी लीनियर मैपिंग है फॉर एग्जांपल, तो अगर मेरा बाइनरी नंबर है 2, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए? 2 वोल्ट, से फॉर एग्जांपल. और लेट्स टेक अ रैंडम एग्जांपल, अगर मेरा 101 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या कुछ भी. अब अगर मेरा 111 है तो इसके इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 10 वोल्ट या 7 या कुछ भी 10 रखते हैं, जरूरी नहीं है. अगर लीनियर मैपिंग ना हो तो मैं वो केस भी बता रहा हूं आपको. सो इसका मतलब हर किसी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक एनालॉग वोल्टेज वैल्यू होगा, और उस वोल्टेज वैल्यू को निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होती है. ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. आपने मे बी अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं आपके गेट के पेपर में. तो फॉर्मूला नंबर 2 क्या रहेगी, किस चीज की? ग्रीन आपको प्रॉपर्ली विजिबल है ना? फॉर्मूला नंबर 2, एनालॉग
voltage value denoted by VA. Analog voltage value VA is equal to resolution multiplied by decimal equivalent of number at input. जो भी इनपुट पे उस टाइम पे डिजिटल नंबर होगा उसका डेसिमल इक्विवेलेंट. समझ आया? आई विल रिपीट. एनालॉग वैल्यू सपोज फॉर एग्जांपल मुझे देखना है 0101 का. ओके, तो रेजोल्यूशन मैंने निकाल ली. उसके बाद डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द नंबर एट इनपुट. इनपुट पे कौन सा नंबर है मेरा? 0101. सो 0101 इज हाउ मच? और उस कितना है? हाउ मच इज 5. सो इसका मतलब नंबर 5. एंड किसी न्यूमेरिकल में ऑल्दो दिस पार्ट इज एडिशनल यू कैन सी गेन. ओके, सो लेकिन गेन बाय डिफॉल्ट होता है 1. गेन हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं 1. सो योर नेट फॉर्मूला बिकम्स आर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट इनटू 1. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको दिया है कि गेन इतना है, तब जाके आप गेन का वैल्यू वही लेंगे, वरना क्या लेंगे? 1. ठीक है जी. अच्छा, हो गए 2. Point number 3. VFS is called as full scale voltage या full scale voltage swing भी इसको कहते हैं. V of FS is called as full scale voltage swing या VFS full scale voltage. ये किसके बराबर होती है? बाय द वे मैं जो आपको दिखा रहा हूं ना इस टाइम, ये सिंपल सी टर्म्स, इस पे गेट में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है. इस एरिया, इस छोटे से एरिया से, मतलब एडीसी से एक क्वेश्चन तो डेफिनेट आता ही है, चाहे वो इन सिंपल जगहों से आता है या इससे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो. सो VFS फॉर्मूला नंबर 3, VFS is equal to V reference divided by 2 raised power n minus 1 into maximum binary number possible with n bits. That turns out to be Vref divided by 2 raised power n minus 1. अगर मेरे पास n बिट्स है तो मैं मैक्सिमम, और उस जरा आप बताइए, अगर मेरे पास n बिट्स है तो मैं मैक्सिमम नंबर कौन सा रिप्रेजेंट कर सकता हूं उससे बाइनरी में? हाँ, 2 to the power n minus 1. If I have 3 bits, I can by 3 I can actually have but 2 raised by 3 means 8, but 8 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं 3 बिट से. एग्जैक्टली, when it starts from 0, so 2 raised by n minus 1. So मैं यहाँ पे maximum binary number possible with n, and rather maximum binary number possible to represent लिखिए यहाँ पे with n bits is 2 raised power n minus 1. and हो क्या रहा है, ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है. so maximum times your VFS will be equal to your Vref.
otherwise you'll have to calculate it. ठीक है जी? No. What is the maximum? I didn't say numbers. It's maximum number. I didn't say numbers. And लिखा भी है यहाँ पे maximum possible number that can be represented with n bits is always 2 raised to n minus 1. Like for example, you have 4 bits. So the maximum number possible is 15, not 16. So the way you have put this question, that way you're right. But मैंने वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने इस तरह से पूछा कि maximum number possible. ठीक है? Is that okay? Okay. Okay, let's move ahead. चौथा point. Percent resolution. Your percent resolution is equal to, yeah, it is given as percent R, but it is equal to percent R in a bracket हम रखते हैं. It is equal to your resolution R divided by VFS into 100. Generally, मैंने भी इस चीज को कंफ्यूज किया था. That percent resolution would mean that resolution divided by 100 means percent resolution. नहीं, it is not that case. Your resolution divided by your full scale range. Your resolution divided by your full scale range will give you the percent resolution of an DAC. And ये किसके बराबर है? We know that our resolution is equal to Vref divided by, okay, and exactly right. And previously हमने देखा your V full scale was nothing but it was equal to Vref into 100. So as a result, this and this will cancel out. Your answer, net answer would be 1 divided by, it's not visible, I think. मैं यहाँ पे लिखता हूँ. So your answer is equal to 1 divided by 2 raised power n minus 1 into 100. So your percent R is equal to this thing. Very, very important formula. अक्सर आप देखेंगे परसेंट रेजोल्यूशन पे आते हैं न्यूमेरिकल्स, एंड परसेंट रेजोल्यूशन का कुछ आइडिया होगा, आपको एन निकालना है या तो कभी यहीं से कुछ और फुल स्केल या बाकी चीजें निकालनी होगी. सो इस पे अक्सर आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे आते हैं. ठीक है, ये लिख लिया सबने? ये लिख लिया सबने? Yes or no? Anyone? Roll number 18. Are you there? Aslan, are you there? Okay, great. So one more point about this. One last point about your DAC is, the fifth point is error. So the maximum acceptable error in ADC or DAC is 1 bit. किसी भी ADC या DAC में, फिलहाल हम DAC की बात करेंगे, जो एरर जो एक्सेप्टेबल वैल्यू होता है वो होता है इक्वल टू
द वोल्टेज वैल्यू ऑफ वन बिट, वन एलएसबी बिट। और अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि वन एलएसबी बिट का जो वोल्टेज वैल्यू होता है वो क्या कहलाता है अरसलान? वन एलएसबी बिट के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वोल्टेज होता है वो क्या कहलाता है? हाँ अरसलान, एनी आइडिया? एनीवन कैन आंसर? वो क्या कहलाता है? Excellent. That is the resolution of DAC. So we would say that the error is nothing but it is the maximum acceptable value, rather than the maximum acceptable value over here is equal to 1 bit LSB, and which is nothing but equal to resolution. So कोई आपसे ये पूछे कि maximum acceptable error कितना होगा तो that will be equal to the resolution, उससे ज्यादा नहीं। तो एक लास्ट पॉइंट यहां पे नोट डाउन कीजिए। नोट, इस सारी चीजों में हमने जनरल फॉर्मूलाज देखी, लेकिन एक नोट लिखिए। मैंने ये कहा कि आपके पास जो एरर होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेबल एरर दैट यू कैन एक्सेप्ट एज इट इज, ओके, नो प्रॉब्लम, दैट इज equal to a residue, that is actually 1 bit LSB, and we know 1 bit LSB is nothing but the resolution. So जो आपका maximum acceptable error का value होगा that will be equal to resolution, ठीक है ना? क्योंकि मैंने इससे पहले आपको कहा ना कि मतलब रेजोल्यूशन का जो आपका वैल्यू निकलेगा वही इसका वैल्यू होगा। इस तरह से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जो फॉर्मूला आप रेजोल्यूशन के लिए यूज करेंगे वही आप इस चीज के लिए यूज करेंगे। सो यहाँ पे एक पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए, that resolution of R dash to R ladder type DAC is equal to V ref by 2 raised power n। इसको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दीजिए। इसका मतलब हमने देखा रेजोल्यूशन का एक स्पेशल केस भी है जहां पे क्या होता है, आपका जो रेजोल्यूशन है दैट विल बी इक्वल टू 2 रेज पावर रेफ बाय 2 रेज पावर n, नॉट 2 रेज पावर n माइनस 1। ये किस वाले, हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? डीएसीज की, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक स्पेशल केस है। कौन सा? R2R, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो अक्सर क्वेश्चन इससे भी आते हैं क्योंकि बच्चा कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में क्या कर लेता है, वी लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर n माइनस 1। क्वेश्चन गलत, गेट में यही चीजें चेक करते हैं, ठीक है? सो मे बी आपका कुछ कॉमन डेटा दिया जाएगा किसी और क्वेश्चन के लिए, वहां पे आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं 2 रेज़ पावर n माइनस 1, अचानक से उसने कुछ डेटा में और इंक्लूड कर लिया तो R2R वाला केस बन गया। वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करनी है 2 रेज़ पावर n वाली, नॉट 2 रेज़ पावर n माइनस 1 वाली, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द जो सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ, सो एक्चुअली हेडिंग जो आज की है वो है बेसिक टर्म्स एंड फॉर्मूलाज फॉर योर एडीसी एंड डीएसी न्यूमेरिकल्स, ठीक है? किसकी क्लास है नेक्स्ट? उनकी क्लास नहीं होगी तो आई विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, ठीक है? बिकॉज एक न्यूमेरिकल करना है, एक दो न्यूमेरिकल करने तब जाके मकसद बनेगा। चलिए जी, व्हेन आई टॉक अबाउट एडीसीज, by the way this was not a good reminder because we had started class just now. So for ADCs, now some basic formulas regarding ADCs, digital to analog converters की basic formulas और basic terms हमने देख ली। Now let's move to some basic formulas of ADC and with that some numericals and we'll wind up for today's class. So ADCs में भी पहली चीज जो है, the first point over here is resolution। लेकिन रेजोल्यूशन की यहाँ पे slightly different formula है, so you can denote it by RADC, वहां पे इसको RDAC लिखिए। So RADC is actually equal to V range
तो यहाँ पे आपका रेफरेंस के बदले क्या आ जाएगा, रेंज। तो थोड़ी सी एक छोटी सी डिफरेंस है, वहां पे वी रेफ था, यहाँ पे क्या है, वी एनीवन, वी रेंज। रोल नंबर 30 एंड 17, ओके, who else is there? So therefore अब क्वेश्चन है वी रेंज निकाले कैसे। यहां पे छोटी सी एग्जांपल देख लीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है कि जो आपकी एनालॉग वोल्टेज वैल्यू है, एनालॉग वोल्टेज इट इज फ्रॉम 0 to 5, तो वी रेंज जो है आपका 5 वोल्ट होगा। वी रेंज कैसे आप निकालेंगे, ये वाला मैक्स माइनस मिन, here 5 minus 0 is nothing but 5, okay। एग्जाम्पल 1 थी ये। एग्जाम्पल 2 देखिए, एनालॉग वोल्टेज अगर रेंज करती है बिटवीन से 2 to 8, और उस रेंज कितनी है, हाँ बैठ पाना, here range is max minus min, that is 8 minus 2 which is nothing but 6। तो समझ आया रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। सो ये आपको क्वेश्चन में दिया ही होगा कि फॉर एग्जांपल ये आपका एडीसी है, इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेंज है 5, तो 5 है तो ऑब्वियसली 0 से ही, या सपोज 10 है, जब एक वाली रेंज नहीं दी है तो दैट बाय मींस बाय डिफॉल्ट 0 से ही शुरू होता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया हुआ है दैट द रेंज ऑफ एन एडीसी इज से 2 to 10, तब जाके आपको एक 2 लेना, दूसरा 10 लेना, वरना बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिकल में लिखा है दैट द रेंज ऑफ दिस एडीसी इज 30 वोल्ट्स फॉर एग्जांपल, तो दैट मींस 0 to 30 ही लेना है आपको, ठीक है। तो दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा है परसेंट रेजोल्यूशन, जिस तरह हमने वहां पे देखा था रेजोल्यूशन और परसेंट रेजोल्यूशन। The lecture might be becoming slightly boring, but please cooperate with me. It will become really interesting because जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स अभी सॉल्व करेंगे। So second है आपका परसेंट रेजोल्यूशन। यहाँ पे लिख लीजिए, the formula is exactly same as that for DAC. Percent resolution ADC के लिए it is exactly same as that of ADC, that is 2 raised to n minus 1 into 100। तो यहाँ पे हमें डिराइव करने की जरूरत नहीं, हम सीधा सीधा लिख लेंगे। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट, डायनेमिक रेंज। रेयरली इस पे आप क्वेश्चन देखेंगे, बट लिखने के लिए लिख लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग। व्हाट डू वी मीन बाय द डायनेमिक रेंज? द डायनेमिक रेंज इज गिवन बाय 6n। इसका एक वैल्यू बस निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखिए, मे बी आ जाए कभी तो, सो वी शुड एटलीस्ट नो दिस। या हम कह सकते हैं इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6n, ठीक है। ये है डायनेमिक रेंज, it is equal to 6n, n is the number of bits, plus 1.76 dB, ये एक dB क्वांटिटी है। ओके ये कहाँ गया, अच्छा जी, जरा एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। A 4-bit DAC, anyone please start writing, I just want to see the solution of this numerical. I just want to see top 3, just top 3 who will solve this, please send it in the group। बस 3, चौथा प्लीज नहीं डालेगा। ये चीजें कल को इंटरनल असेसमेंट इवैल्यूएट करने में मदद करती है, ठीक है। सो आई होप दैट यू विल डू इट वेरी फास्ट। सो द क्वेश्चन इज, a 4-bit DAC has reference voltage equal to 5 volts, comma, if binary data at the input side is equal to 1001, if the binary data at the input side is equal to 1001, then find the analog voltage value VA. Then find analog voltage value VA. I just want to see for the top 3 who will send it fast in the group.
प्लीज यू सॉल्व इट एंड सेंड इट इन द ग्रुप. सॉल्व भेजना है बेटा. नहीं, सॉल्व इट भेजना है ग्रुप में. जरा भेजो, मैं देखूं तो. शाबाश बेटा, सॉल्व सेंड करो. बस बताओ. मेरा फोन का है. मेरा फोन का है. क्या बोल रहा? कोई कुछ बोल रहा था क्या? क्या बोल रहा? Ya hiç maslı TPX. Okay. So the question is a 4-bit DAC, digital to analog converter, has reference voltage equal to 5 volts. If binary data at the input is equal to 1001, find the analog voltage corresponding to this value. Find the analog voltage. बस 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 और किसी को भेजने की जरूरत नहीं है. I agree क्या चलेगा. İnşallah emin satsı olsun. So what the formula which you're using, beta, जिसने बोला 3 volts, is you're using, right, the resolution into decimal equivalent into gain. That's absolutely correct. Yavar, is it you? That's good. I will remember that. I will try to remember that rather. So then there is another one. I don't know the roll number. Then there is ABC motion. Okay, then there is 41. Fine. 9 by 3 is 3. चलो जी ठीक है. So this is good. इसी तरह एक और न्यूमेरिकल जल्दी जल्दी से. लिखा है जी that the resolution of a DAC, question is, question लिखिए जरा. The resolution of a DAC is approximately equal to, the resolution of a DAC is approximately equal to 0.4% of its full scale range. The resolution of a DAC is approximately equal to 0.4% of its full scale range. Full stop. Find N. Find N. N समझते हैं ना कि ये कितने बिट का ADC, कि ये कितने बिट का DAC है. Find N. जरा कुछ फॉर्मूला निकालिए, मुझे N बताइए कितना होगा इसके लिए. I'll repeat the question. The resolution of a DAC is approximately equal to 0.4% of its full scale range. Full stop. Find N. शायद मानने वाले फाइनल. फाइनल आंसर है. फाइनल 8 कौन बोल रहा है? ये बकरी कौन है? मैं.
ऐसा बोलना, मैं तो बकरी करती है ना। एनीवेज, और कोई आंसर इसका है 8 के बगैर? 2। और कौन सा आंसर है 8 2 और? इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन जल्दी जल्दी से। ये क्या है आपका, एडीसी है कि डीएसी है? डीएसी। तो आर डीएसी लिख लेते हैं। आर डीएसी जो है, मैंने आपसे ये भी कहा कि फुल स्केल डिवाइड बाय 2 रेज पर n माइनस 1 रहता है। एंड आर डीएसी आपको दिया है 0.4 बाय 100, क्योंकि 0.4% था। 0.4%, जब भी किसी वैल्यू के सामने परसेंट होगा तो डिवाइड बाय 100 करना है आपको। 0.4%, 10%, दैट मींस 10 बाय 100, ठीक है। 0.4% ऑफ fs, इसका मतलब 0.4 मल्टीप्लाइड बाय fs is equal to fs by 2 raised power n minus 1. Fs cancels out. What we are left with 2 raised power n minus 1 is equal to 100 divided by 0.4. When you solve this, you ultimately will have 2 raised power n is equal to approximately 250, where n is approximately equal to 8. 9 का पढ़ो 249। Anyways, आज कैलकुलेटर फारक हिस्सा है, ठीक है। वला मैं सहल यूता चलन कसा 996 कुछ 996। अच्छा, ये 100 डिवाइड बाय 0.4 कह रहा। ठीक है, 251 मेरे हिसाब से ठीक है। ओके, बाय द वे, जब मैंने आपको एरर एरर बोला ना लास्ट टाइम, एरर इज इक्वल टू 1 बिट एलएसबी, वहां पे एरर के साथ एक टर्म आप जोड़िए, एरर एंड एक्यूरेसी। हम कभी कहते हैं एक्यूरेसी जो है इस एडीसी की, वो है जो 1 बिट के साथ वोल्टेज वैल्यू है, दैट इज इक्वल टू रेजोल्यूशन। सो एक तो एरर बराबर है रेजोल्यूशन के, और एक्यूरेसी भी बराबर है रेजोल्यूशन के, ठीक है जी। ये जरा ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एरर तो एक्यूरेसी बराबर रेजोल्यूशन। तो एक और क्वेश्चन है यहां पे, एन एन बिट एडीसी, जरा लिखिए तीसरा क्वेश्चन। एन एन बिट एडीसी is required to convert an n-bit ADC is required to convert an analog input in the range of 0 to 5 volts, in the range of 0 to 5 volts, to an accuracy of 5 millivolts, to an accuracy of 5 millivolts. Full stop. Find n. Find n. Find n. मैंने आपको अभी ये बताया, जो आपका वो एरर था ना, एरर, जो आपका वो एक बात सुनिए पहले, जो आपका एरर और एक्यूरेसी, ये दोनों होते हैं बराबर 1 बिट एलएसबी वोल्टेज के लिए, विच इज नथिंग बट योर आर। सो यहाँ पे एक्यूरेसी दी हुई है, तो मैं ये कहूं यहाँ पे रेजोल्यूशन दिया हुआ है कितना, 5 मिलीवोल्ट्स, ठीक है। वहां से आपके लिए हिंट है, यहां से आगे सॉल्व कीजिए जरा। आई जस्ट रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन था, an n bit ADC is required to convert an analog input
in the range of 0 to 5, range हो रहा है 0 to 5, ठीक है, to an accuracy of 5 millivolts, to an accuracy of 5 millivolts, full stop. Find the value of n. Find the value of n. From R to R, DAC used to convert the reference voltage हो गया जी बेटा ये सॉल्व हाँ n is 10 exactly right. Who is this? Aruz. Okay. So n is 10 in this case. कैसे किया आपने अरूज जरा बताइए right exactly right 2 is equal to n 1001 so therefore we get the answer. Okay ji next question very quickly. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा जल्दी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए जरा, ध्यान से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनिए जरा. फॉर a R to R type DAC with reference voltage, yeah, for R to R type DAC, logic 1 is represented by 10 volts. For R to R type DAC, logic 1 is represented by 10 volts. या फॉर के बदले लिखिए R to R type DAC where logic 1 is represented by 10 volts is used to convert a 5-bit number into its equivalent analog value. क्वेश्चन जो करना है आपको, जो ढूंढना है आपको, वो क्या है? यू हैव टू फाइंड, अब लिखिए फाइंड find the resolution, find the resolution, point number 1, find the resolution of the
क्या है, एडीसी है कि डीएसी है? डीएसी. फाइंड द रेजोल्यूशन ऑफ द डीएसी and the output voltage value. Find the resolution of the DAC and the output voltage value when input is equal to 11010. Find the output voltage value. Yeah, find the output of the DAC when the input number is 1101. मुझे एक चीज बताइए, पहले आप इससे पहले क्वेश्चन पढ़िए. मैं बोल रहा हूं आपको आउटपुट ढूंढिए. सीरत, जरा मुझे आप बताइए. सीरत, आर यू देयर? ओके, मुझे आप बताइए, इस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का आउटपुट क्या होगा? मैक्स, जरा आप बताइए. मैक, आर यू देयर? इसका आउटपुट क्या होगा? मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फाइंड द आउटपुट ऑफ द डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर व्हेन द इनपुट नंबर इज 11010. हाँ, ऑब्वियसली एक एनालॉग वोल्टेज वैल्यू होगा. राइट, एग्जैक्टली करेक्ट. सो इसका मतलब आपको ढूंढना है एनालॉग वोल्टेज वैल्यू VA और उसकी फॉर्मूला यूज करनी है. बस हो गया काम. पुट द वैल्यूज, गेट द रिजल्ट. क्या बेटा? यू आर रॉन्ग. आपने क्या 7.81 क्या है आपका? फिर से बताइए जरा आंसर. ये क्या फॉर्मूला आपने यूज की? राइट. ओके. एक्सलेंट. No, it's not 25. By the way, it's 26, I think. Then, then then it should be something else. Oh my God. Yes, 8.125 is the answer. यार किसी सा वेरिएशन नहीं होता है. मैं मुख्तलिफ ब्रांड इन कैलकुलेटर इनमें यहाँ पर से क्यों दे. चलो जी, one last question and with that we will leave. For a, लिखिए जरा. Determine the number of bits required to represent an analog voltage value into its digital equivalent. Determine the number of bits required to represent an analog voltage value into its digital equivalent if percent resolution is equal to 0.4. If percent resolution is equal to 0.4. If percent resolution is equal to 0.4. ठीक है, लिखा आपने. हमें n ढूंढना है. परसेंट रेजोल्यूशन जो है वो है कितनी? 0.4. बेटा ये वाला आपने कर लिया. हाँ, इसमें कुछ नहीं करना था. ये एक सिंपल क्वेश्चन था. R to R, चूंकि R to R का कंसेप्ट है, R to R के केस में
आपका जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है वी रेफ बाय 2 रेज पावर n एंड रेफरेंस था आपका 5 ही था ना, हाँ रेफरेंस कितना था 10, ओके रेफरेंस था 10 और 2 रेज पावर हो गया 32, ये आपका रेजोल्यूशन निकला। एनालॉग वोल्टेज वैल्यू कुछ नहीं था, रेजोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द इक्विवेलेंट है इस नंबर का 26, तो एनालॉग वैल्यू जो VA था वो था 10 डिवाइडेड बाय 32 इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट है इसका 11010 का 26, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 8.125। ठीक है जी, तो ये खत्म हो गया इसके साथ ही। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, मैं बस और उस पन्ने जमाना चलो आज पोर तोत के ना तस बैल गसन यम टाइम जाए क्या और अच्छा नींद नहीं आई, चलिए ठीक है। सो 0.4 ऑनलाइन में हो जाता है सही, मतलब और होता है ना वहां पे आई कांटेक्ट होता है, अगर इस हल्का ये गछ तो ये का छिपाई में कहां गए लेफ में आज तोरमुत ते मैं बोतल बोतल रट में सॉरी मैं कर सुबह फाइजरस आलो पाई गया एनीवेज। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन हैज टू बी फाउंड लाइक दिस, क्या है इसका आंसर बेटा बताइए। सही, इसका आंसर है 8। आई थिंक यू कैन सॉल्व इट, मैथमेटिक्स सिंपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड ऑल दैट। सो विद दैट आई थिंक वी विल हॉल्ट टुडे एंड ये जो आज की क्लास थी मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी कंसिडरिंग योर गेट एग्जामिनेशन, इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आता है, नेट पे थोड़ा सा डाल दीजिए। आई वुड बी रियली हैप्पी इफ एनी ऑफ यू just solves a random question and post that in the group, so this is the question which I found online and I was able to solve it. Please just do it if it is possible right now or maybe tomorrow, जब भी possible है। सर ये क्वेश्चन था, ये गेट का कोई क्वेश्चन है या कहीं भी रैंडम एग्जांपल है इस पे एडीसी पे और मैं कर पाया या कर पाई, आई विल रियली हैप्पी इफ यू शेयर दैट। थैंक यू वेरी मच। विद दैट we'll stop and we'll go for attendance.